Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing good. This is Wanda Dubey. So let me just quickly get myself an image. And where is that image file? So it is basically in downloads, and let me just. Oh yeah. So basically it's just about the video capture device. So video capture device, and let me just uh, you know okay, let's do let's do this one more time. Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you're doing good, and this is Wanda Dubey. So once again, this is a React.js in one shot live stream. This is the second live stream where we are gonna basically study React and build some mini projects around it. And we'll try to finish this entire playlist, which I'm just gonna show you right now what it is all about. And after we do that, basically that's gonna be our current agenda for this live stream. I hope you guys are excited for the same. So basically, I'll just quickly tell you about the format of how you're gonna proceed. So basically, I have some. Okay, so I'm vanished. So I have some blank paper with me, which are gonna act as my notes. I would love you to basically. I would not basically expect you to have some kind of system to create notes as well. I'm having some problem with OBS, otherwise I would have created notes in the system. But what I find useful is to create notes as like create notes like this every time when I try to study. So does this hoodie look good on me? Hmm. should i should I study like this? No, probably not. So let's basically move on to the source of how we are gonna study this. Okay, so yep. So I hope that this entire screen is visible to you right now. And let me. So yeah, I hope that this screen is visible to you. Where is YouTube? Here's YouTube. Okay, I hope that YouTube is visible. Let me just check because I have some doubts about how I have set up my OBS. So that's basically one of the problems. So because basically I can check it over here. Wanda Dubey. I'll just search my channel name and see we are live here. And I'll just mute it. Auto 1080p, perfect. Right, so the entire screen is visible, perfect. And let me just check the audio once. So that's basically one of. Right, the audio is going great as well. So now we are done with everything, and now we can move on to the streaming section of the website. Not the streaming section, but basically the section where I show you where what is the resource which we are gonna follow. So for this resource we are gonna use chai or code, or let's go with Hitesh Chaudhary for this. Okay, and I'll just quickly go to his playlist, and I'll first of all live in this video will give him credit as well. My name is Hitesh, and welcome to this fresh new series on React. Yeah. This is a series focused on absolute beginners who want to get started in React but are not able to find a precise, concise resource to learn React with an absolute basic approach so that anybody can get started with it, to an approach where we build. So right now I'm confused about basically confused between learning from um, learning from the English playlist or Hindi playlist. The entire setup is same, but I still
feel like maybe I'll just go with um, the Hindi playlist. Let me just check. Use effect, use ref, and use callback in one video. I'll just go with chai or code playlist. Use effect, use ref. Let me just go to the playlist as well. Just check within one project. Okay. So let's basically start this series itself. This is gonna be in Hindi. I'm sure that majority of the audience is from is comfortable in Hindi. Okay, so I guess that won't be a problem for you guys. Now I'm gonna just have to open a new tab in my like in my browser. So I'll just have to do that and we'll be good to go. So let me just here's the xskillet draw and so let me just check if it is visible in the OBS or not. So I'll just keep my OBS over here and I'll quickly add window capture skillet okay. If anybody knows how to handle and learn like OBS, or if there's any good tutorial out there to which basically helps you to learn how to use OBS, then please do let me know in the comment section of the video. Okay, so let me just grab a window capture device and I'll name it I'll just say browser and Brave browser, new tab. I hope that it's visible. I guess yes, it is. Right, so it is visible. Perfect. Yeah, so I guess it is right above my face. So working with OBS is difficult, man. Working with OBS is definitely difficult. I'll just probably lock its position as well. Okay, right, perfect. I'll quickly reduce its size as well. I'll shift it over here, and that sounds good. That looks good. Right, perfect. What if I open xskillet draw? Will it go away? No, it didn't. No, it didn't. Amazing, amazing. So that's nice. Okay, so now probably we can use this every time whenever I have to. So this was like one of my major concerns. Right, so finally OBS is set up. I'm sorry for the delay. So I just want to check what is the length of the YouTube playlist. So I'll just go to a website, YouTube playlist length calculator. Let's just quickly copy the playlist link and I'll just go with analyze. Okay, so yeah, let's analyze this. So sorry, yeah, okay. So
there are 34 videos, mostly 30 videos. Average length of the video is 35 minutes. Total length of the playlist is 19 hours and 50 minutes 56 seconds. So probably it will squeeze down. So basically, the actual length of the playlist might be, if we so basically we are gonna watch this at 1.25x, and the length is 15 hours. So I think the entire projection would somewhere lie 14 hours. Basically entire projection would lie somewhere around 13 or, oh, okay, so basically it's gonna be 16 hours. My bad. So basically the what I project is we're gonna have to we have 14 hours of live content. So basically what do we have? We have 14 hours of live content to watch and master. Okay, so we have this, and which will probably take us somewhere around, I'll add on, like I'll just do 14 into 3. So because we gotta have to do some practice in between as well. So I guess not 14 into 3, but I'm gonna take twice the amount. So basically it will be 28 hours, which is 1 day and 8 hours. So this is basically our current scenario, how we're gonna do it. So I'm even gonna cut down on this 8 hour, but probably this will require us to stream for 24 hours straight. So basically streaming for 24 hours. So we're gonna divide this into 3 parts. Okay, we are gonna divide it into 3 parts. There are 34 videos, so let's try to cover up and finish 34 videos. Basically let's try to cover 10 videos by today, and then 10 videos later, tomorrow, and then 10 videos day after tomorrow. Right, so let's try to do it this way, and let's keep this as our target. Okay, so great. Now, so just let me create a workspace pretty quickly over here. Okay, and we'll just name it target for 31st Jan. And we are gonna write it 10 videos of shy or code React, and let's start the video. Where is the YouTube section? So I just quickly wanna, I'll have to rescale this. Yeah, so quickly rescaling YouTube, and let me just say, yeah, perfect. Okay, let's start the video. इससे क्या होता है, मजेदार रहने वाली है ये सीरीज। बहुत कुछ है इस सीरीज के अंदर, बहुत कुछ प्लान कर रखा है। हाँ जी, वापस आ गया हूँ इस बारे में, इस विषय पे वापस आने के विषय पे चर्चा करेंगे किसी लाइव सेशन के अंदर। बहुत ही जल्दी देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पूरा देखेंगे, किस तरह से हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्ट का रोड मैप। अब देखिए, रिएक्ट के रोड मैप अलग अलग हो सकते हैं, हर आदमी अपना अलग रोड मैप देगा। Okay, so in the meanwhile, I'm gonna start a stopwatch as well to keep track of the time. Stopwatch.
Right, perfect. So now we have a timer going on as well, which looks pretty good. का रिएक्ट है क्योंकि सबके अलग-अलग तजुर्बे हैं, सबके अलग-अलग जर्नी है रिएक्ट को सीखने की, तो सबके अलग-अलग तरीके होते हैं। पिछले करीब रिएक्ट जब से स्टार्ट हुआ तभी से मैं रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट वर्जन से ही। इनफैक्ट जब मार्केट में आया भी नहीं था रिएक्ट तब भी मुझे मौका मिला था रिएक्ट को देखने समझने का फेसबुक की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। तो ये मैं आपको सारा बताता हूँ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज है व्हाई, कि रिएक्ट को सीखना क्यों है। अब रिएक्ट को सीखना क्यों है, देखिए जब तक आपको उस चीज का ये नहीं पता कि यार इस चीज की मुझे जरूरत क्यों है, तब तक वो फिजूल खर्ची कहलाती है। जैसे आपको एक मैकबुक खरीदना है, अब आपने कहा यार अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए खरीदेंगे तो फिजूल खर्ची है। लेकिन अगर आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, उस मशीन की लाइफ टाइम कितनी है, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है, वरना तो सिर्फ हाइप है। तो इसलिए रिएक्ट को सीखने के लिए कि मार्केट में डिमांड ऐसा नहीं है। अब देखिए रिएक्ट की हाइप है, 100% बात है, रिएक्ट की बहुत हाइप है। यहाँ तक कि आप अभी जो जावास्क्रिप्ट सीख के आए उसके बाद आप बैकएंड में जा सकते थे कंप्लीटली, लेकिन क्योंकि मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा है इसलिए हम रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब मार्केट, हाँ जी जॉब मार्केट काफी अच्छा है रिएक्ट का, इस बात से डिनाई नहीं करूंगा आज की डेट में। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्ट डेवलपर मत बनिएगा, नहीं ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए रिएक्ट को सीखने के लिए कि मार्केट में डिमांड ऐसा नहीं है। अब देखिए रिएक्ट की हाइप है, 100% बात है, रिएक्ट की बहुत हाइप है। यहाँ तक कि आप अभी जो जावास्क्रिप्ट सीख के आए उसके बाद आप बैकएंड में जा सकते थे कंप्लीटली, लेकिन क्योंकि मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा है इसलिए हम रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब मार्केट, हाँ जी जॉब मार्केट काफी अच्छा है रिएक्ट का, इस बात से डिनाई नहीं करूंगा आज की डेट में। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्ट डेवलपर मत बनिएगा, नहीं ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए रिएक्ट को सीखने के लिए कि मार्केट में डिमांड ऐसा नहीं है। अब देखिए रिएक्ट की हाइप है, 100% बात है, रिएक्ट की बहुत हाइप है। पर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, इनमें अंतर है, कभी फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन जॉब मार्केट ठीक ठाक हाई है, ऐसा नहीं है कि यही भगवान है, ऐसा नहीं है। एंगुलर की भी जॉब है, व्यू की भी जॉब है, लेकिन रिएक्ट की जॉब कंपैरेटिवली हाई है। ट्रेंड है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिएक्ट बहुत ही एक ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है, बहुत ही ज्यादा काम आ रही है और यूआई बनाने के लिए। अब इन चीजों से क्या लगता है कि हाइप भी है, जॉब भी है, ट्रेंडी भी है और मैं यूआई बना लूंगा इससे, इसलिए मैं रिएक्ट सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं सीखना है रिएक्ट। देखिए यूआई रिएक्ट से पहले भी बन रहे थे, हमारे पास जेक्वेरी थी, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है और सीएसएस लाइब्रेरीज भी हैं, उनसे भी यूआई बन रहा था। तो फिर रिएक्ट की जरूरत कहाँ पे आई? देखिए जब तक आप ये अच्छे से नहीं जस्टिफाई कर सकते ना कि मुझे रिएक्ट की जरूरत कहाँ पे है, तब तक आप रिएक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं उसको सीख के। रिएक्ट जो है वो एक्चुअली में काम आता है टू मेक इजी, इट मेक्स इट इजी टू मैनेज एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड। अब देखिए किसी ने एक सिंगल पेज बनाया कि ये रही मेरी फोटो, ये रहा मेरा डिटेल, कॉन्टैक्ट में लिंक्डइन, ये मेरा प्रोफाइल है। वो काम तो आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे। वहां पे अगर रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो ओवरकिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा हमेशा, आपका जो रिएक्ट होता है, जो आपके पास रिएक्ट है, वो एंड ऑफ द डे कंपाइल होता है आपके पास एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में, और ब्राउजर को सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही समझ आता है, आपकी रिएक्ट की लाइब्रेरी मॉडर्न ये सब कुछ समझ नहीं आता। तो जो रिएक्ट से बिल्ड होकर बनने का जो टाइम है, एक्चुअली में टाइम तो लग ही रहा है, तो वहां पे कोई सेंस नहीं है रिएक्ट को यूज करने का। रिएक्ट को यूज करने का सेंस है जहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड हो। कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड कैसा? जहां पे काफी कुछ चीजें हो रही है, एक बटन के क्लिक करने से 3 जगह जाए रिएक्ट। देखिए रिएक्ट सीखने का लोग कहेंगे कि कोई टाइम नहीं होता, बेसिक्स जस्ट सीख लो जावास्क्रिप्ट के और सीधा कूद पड़ो। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी लाइब्रेरी के बारे में सीख रहे हैं या फिर आप कोई भी फ्रेमवर्क के बारे में सीख रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो पहले जावास्क्रिप्ट की मास्टरी कीजिए, सिर्फ बेसिक्स नहीं मास्टरी कीजिए अच्छे से। देखिए पेड कोर्सेज में तो क्या है कि करिकुलम है, खत्म करना है, तो वहां पे ऑब्लिगेशंस अलग होती है, बुराई नहीं है वहां पे भी, लेकिन वहां ऑब्लिगेशंस अलग होती है। यहाँ पे यूट्यूब है, फ्री है, तो इसलिए सब कुछ फ्रीली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कहूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मास्टरी करिए। मास्टरी करने से मतलब है कैसे थ्रेड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट का, क्या उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, कैसे फंक्शंस आते हैं, कैसे मेमोरी में जाते हैं, यहाँ तक कि कैसे फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, सब आपको आना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अच्छे से डॉम मैनिपुलेट। So fortunately, we all know that, like how to basically, like write code in JavaScript and everything. Fortunately, I know that, so that won't be a problem for me, at least for me, at this point. ये कैसे थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, डॉम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इतना लगना चाहिए आपको कि यार रिएक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं जावास्क्रिप्ट से सारा काम कर सकता हूं, लेकिन रिएक्ट से करूंगा तो थोड़ा फास्ट कर दूंगा, आसान कर दूंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब उसके बाद रिएक्ट शुरू कीजिए। अब देखिए मैंने जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज बनाई है, चाय और जावास्क्रिप्ट, अगर आपने वो देखी है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्ट के अंदर स्विच कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी सीरीज, अगर आपने किसी और की भी सीरीज देखी तो भी आप अच्छा से कंप्लीट करिए, समझिए, तो आप आ सकते हैं। आप किसकी सीरीज देखिए, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सारे अपने भाई दोस्त हैं, जिसकी भी देखी हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सीरीज देखने के बाद आप इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मोस्ट प्रोजेक्ट होते हैं उनको रिएक्ट की एक्चुअली में जरूरत ही नहीं होती है इनिशियल फेज में। जब छोटा सा प्रोजेक्ट है कि भाई एक एपीआई हिट करिए, एपीआई का रिस्पांस आया है, कार्ड्स के अंदर डेटा शो करा है, ये काम तो जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता था। हमने देखा है फैच एपीआई कितना पावरफुल है, कैसे काम करता है, आगे सारा डेटा आ जाता, लूप लगा के वहां पे भी कर देते। हाँ, उन केसेस में आपको रिएक्ट की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार यहाँ पे रिएक्ट का थोड़ा ओवरकिल हो रहा है, वहां पे आप रिएक्ट की बेस्ट एप्लीकेशन बना पाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया हमें समझ में। तो फिर रिएक्ट बना ही क्यों? अगर सारा काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो ये बना ही क्यों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए अगर आप रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे इस डायग्राम से। अगर आपको याद हो तो मार्केट के अंदर एक ऐप है, अभी भी है, जिसका नाम है फेसबुक। अब फेसबुक के अंदर क्या था, एक प्रॉब्लम थी, फैंटम मैसेज प्रॉब्लम। अच्छा, ये फैंटम मैसेज क्या, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, घोस्ट मैसेज। अगर आप कोई टॉक देखेंगे या फाउंडर्स वगैरह के ट्वीट्स वगैरह देखेंगे, वहां पे उसको फैंटम मैसेज ही बोलते हैं। मैंने फैंटम थोड़ा नाम हटा के घोस्ट रख दिया, इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम थी कि फेसबुक के अंदर अगर आपको याद हो तो टॉप पे एक चैट आइकन होता था, जहां पे जितने नए मैसेज आते थे उनका काउंट आपके पास आ जाता था कि 3 लोगों से नए मैसेज आए तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ जाता था, 5 से आए तो 5 लिखा हुआ जाता था। फिर जैसे आप इस पे क्लिक करते थे एक ड्रॉप डाउन ओपन होता था, वहां से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते थे मैसेजेस को। तो वहां से ड्रॉप डाउन ओपन करा तो ड्रॉप डाउन के अंदर भी एक आपके पास आइकन आता था जहां पे मैसेज नंबर लिखा था कि इस यूजर ने 5 मैसेज भेजे, इस यूजर ने 3 मैसेज।
फिर यहाँ से आपका चैट बॉक्स ओपन हो जाता था और यहाँ पे एक चैट करके एक आइकन भी आता था जहाँ से पूरा का पूरा चैट बॉक्स ही ओपन हो जाता था, पूरा चैट सेंटर जिसको बोलते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे यूजर से बात कर ली, लेकिन ये जो आइकन है ना 1 लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, ये गायब ही नहीं होता था। ऊपर से आपने कई बार डायरेक्टली आप यहाँ पे आ गए हैं, अगर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके तो वो आइकन यहाँ पे भी रहता था और यहाँ पे भी रह जाता था। अरे मैंने पढ़ लिया है वो मैसेज, तो अब मुझे क्यों शो हो रहा है वो मैसेज? ये प्रॉब्लम थी हमारे रिएक्ट की एक सोर्स जिसको बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम से परेशान होकर कहा यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजर्स के फीडबैक आ रहे हैं कि यार हमने मैसेज पढ़ लिया है, अब भी नोटिफिकेशन दिखा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को तो नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम भी होती है, वो सारे नोटिफिकेशन क्लीन रखना चाहते हैं अपना। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे रिएक्ट की, यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है ऐसी कि आपकी जो स्टेट है वो तो है जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। अच्छा ये स्टेट क्या है? देखिए स्टेट एक फैंसी नाम दिया जाता है सारे वेरिएबल्स के लिए। अब प्रॉब्ली वेरिएबल्स तो नहीं कहूंगा, बट समझने के लिए ठीक है कि आपका जो 1 मैसेज आ रहा है ये है कहाँ पे? किसी वेरिएबल के अंदर एक स्टेट है वेरिएबल की कि वहाँ पे 1 मैसेज दिखाओ। अब ये जो सारी चीजें, ये तो ऑब्वियसली बात है जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी रहती है स्टोर कि हाँ वहाँ पे 1 दिखाना है, वहाँ पे 5 दिखाना है, वहाँ पे दिखाना भी है मैसेज या नहीं दिखाना है। और उसके अलावा हमारे पास जो यूआई है, यूआई कौन मैनेज करता है? आपका डॉम। पता था आपको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉम है और ये जो जावास्क्रिप्ट की स्टेट है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बात। अब इन दोनों के बीच में कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा था? सिंक। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको एक सेकंड। का डॉम पता था आपको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉम है और ये जो जावास्क्रिप्ट की स्टेट है, यू नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजर्स के फीडबैक आ रहे हैं कि यार हमने मैसेज पढ़ लिया है, अब भी नोटिफिकेशन दिखा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को तो नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम भी होती है, वो सारे नोटिफिकेशन क्लीन रखना चाहते हैं अपना। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारे रिएक्ट की, यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है ऐसी कि आपकी जो स्टेट है वो तो है जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। अच्छा ये स्टेट क्या है? देखिए स्टेट एक फैंसी नाम दिया जाता है सारे वेरिएबल्स के लिए। अब प्रॉब्ली वेरिएबल्स तो नहीं कहूंगा, बट समझने के लिए ठीक है कि आपका जो 1 मैसेज आ रहा है ये है कहाँ पे? किसी वेरिएबल के अंदर एक स्टेट है वेरिएबल की कि वहाँ पे 1 मैसेज दिखाओ। अब ये जो सारी चीजें, ये तो ऑब्वियसली बात है जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी रहती है स्टोर कि हाँ वहाँ पे 1 दिखाना है, वहाँ पे 5 दिखाना है, वहाँ पे दिखाना भी है मैसेज या नहीं दिखाना है। और उसके अलावा हमारे पास जो यूआई है, यूआई कौन मैनेज करता है? आपका डॉम। पता था आपको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉम है और ये जो जावास्क्रिप्ट की स्टेट है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बात। अब इन दोनों के बीच में कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो रहा था? सिंक। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको एक सेकंड। ये हमारे फंडामेंटल्स, ठीक है। उप्स, थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा, इसको हम गैप कर देते हैं, वापस यहाँ आ जाते हैं। ओके तो ठीक है, थोड़ा सा हिकअप चलता रहता है। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर थी स्टेट और हमारे पास डॉम, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए थी बात। और दोनों क्या होने चाहिए थे? ये दोनों होने चाहिए थे हमारे पास सिंक, जो कि सिंक नहीं हो रहे थे। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारी रिएक्ट ने पूरी तरह से सॉल्व कर दी थी स्टार्टिंग में, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। इवेंचुअली काफी अपडेट्स के बाद सॉल्व हुआ था, बट यहाँ से रिएक्ट हमारी स्टार्ट हुई थी। अच्छा जब ये जो इनकंसिस्टेंसी थी हमारी यूआई के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो डैन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट वैसे कंप्लीट टीम का काम था, बट डैन करके एक नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप जरूर ढूंढ लेंगे उसको, तो बताइएगा कि किस तरह से उन्होंने मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हैं, वन ऑफ द लीड फाउंडिंग मेंबर इसके अंदर। अब क्या है दूसरी चीज कि ठीक है आपको समझ में आ गया, घोस्ट प्रॉब्लम थी, हमारी स्टेट मैनेज हो रहे थे, हमारे वेरिएबल्स और जो डॉम है आपस में बात नहीं कर पा रहे थे इजीली, और सिंकिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिएक्ट आया। अच्छा ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करी इन्होंने रिएक्ट से, तो काफी इनको एप्रिसिएशन मिला इनसाइड टीम के अंदर, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड ने कहा इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक पूरी लाइब्रेरी बना दी। और इनिशियल डेज में रिएक्ट को काफी हेट मिला था। हाँ जी, काफी रेडिट थ्रेड्स हैं, अभी भी मिल जाएंगे आपको, जो कहते थे रिएक्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन फिर इवेंचुअली अपडेट्स हुए और वे लोगों ने काफी प्यार दिया रिएक्ट को, और आज कहाँ पे आपको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ था कि रिएक्ट को जब इतना एप्रिसिएशन मिला तो उन्होंने इस लाइब्रेरी को ओपन सोर्स किया और बताया कि इस तरह से हमने चीजों को सॉल्व किया। एक टॉक आई बड़ी फेमस जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो खान अकेडमी ने इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया, और उसके बाद अनस्प्लैश ने भी इसको अडॉप्ट किया। ये दोनों बड़ी ही पावरफुल वेबसाइट्स हैं इंटरनेट की। इन दोनों ने जब इसको अडॉप्ट किया और इनके जो टेक्निकल टीम मेंबर्स उन्होंने जब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अप्रिशिएट किया, यार ये रिएक्ट लाइब्रेरी ना दिखने में बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड होती भी थी, क्लास बेस वगैरह सब चलता था। तो उन्होंने कहा कि यार दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में जब आपका यूआई बहुत बड़ा है और बहुत जगह से कंट्रोल हो रहा है, बहुत वेरिएबल्स इधर उधर से आपकी एक बटन क्लिक होने पे 3-4 जगह स्टेट अपडेट हो रही है, तभी रिएक्ट लाइब्रेरी ना बड़ी कंसिस्टेंटली काम करती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी थी रिएक्ट के अंदर, इसने सभी को इंप्रेस किया। तो यहाँ से हमारी रिएक्ट की शुरुआत हुई। काफी मजा आ रहा होगा स्टोरी सुन के, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर स्टोरी सुन के मजा आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी कहानी। लेकिन एक और चीज जान लेते हैं कि आपको रिएक्ट कब नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे करता है, कैसे सिंगल थ्रेड पे हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं बाइंड दिस वगैरह, इनकी अगर आपको नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपको डॉम का भी नॉलेज नहीं है कि डॉक्यूमेंट में किस तरह से ट्री बनता है पूरा, तो आप प्लीज इसको मत पढ़िए। हाँ जी, ओपनली कह रहा हूँ, तो रिएक्ट के अंदर मत आइए, पहले जावास्क्रिप्ट पे जाइए। अगर आपको डॉम का ज्यादा आइडिया नहीं है तो मेरे इंग्लिश चैनल पे एक वीडियो है ब्राउजर की इनर वर्किंग के बारे में, हिंदी में बनाएंगे बहुत जल्दी लेकिन अभी वहां पे जाकर देख लीजिए, काफी काम हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस, हाँ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट का लर्निंग प्रोसेस कि कैसे रिएक्ट को सीखा जाए। देखिए रिएक्ट को सीखने के, इनफैक्ट किसी भी चीज को इस फेज पे सीखने के दो पेडागोजी होते हैं, दो टीचिंग मेथड्स होते हैं। पहला होता है आप गो इन डेप्थ मेथड, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट बना के। अब आप कहेंगे नहीं हमें तो दोनों करने हैं, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग का एक मेथड होता है, उसमें आप दोनों में से एक ही चूज कर सकते हो। अच्छा, जो लोग इन डेप्थ चूज करेंगे उनको क्या होगा, डायरेक्टली वो बेसिक्स फंडामेंटल फाउंडेशन पे जाना चाहते हैं कि मुझे अभी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम नहीं करना है, मेरे लिए हेलो वर्ल्ड भी ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन डेप्थ कैसे जा सकता हूं। और तो अगर आप इन डेप्थ जाओगे तो आपको कैसे टर्म्स मिलेंगे, बेबल के बारे में सीखिए, क्या होते हैं ये बेबल्स वगैरह, और भी हैं बहुत सारे, किस तरह से काम करते हैं। रिएक्ट के फाइबर और रिएक्ट के वर्चुअल डॉम, ये सब क्या होता है, डॉम तुमने सुना था, वर्चुअल डॉम के बारे में बताओ, ताकि कॉन्सेप्ट आप समझोगे वहां पे। डिफिंग एल्गोरिथम के बारे में बताओ कि डिफिंग एल्गोरिथम कैसे होता है, रिएक्ट कैसे काम करता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ट्री शेकिंग क्या होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे हमें पहले ध्यान देना पड़ता है, उनको हमें काफी एग्जांपल से समझना पड़ता है।
ये प्रोसेस होता है आपका डायरेक्टली इन डेप्थ जाके। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? बैकग्राउंड चेंजर हो गया, टू डू हो गया, कैलकुलेटर हो गया, गिटहब की एपीआईज हो गया। उसके बाद ये कैसे काम कर रहे हैं इनको देखने के लिए हम इन डेप्थ के अंदर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी यही होता है, अगर आप इन डेप्थ जाते हैं तो पहले आप इन चीजों को पढ़ते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे चल जाते हो। तो हाँ, होते दोनों ही काम है, लेकिन स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ता है। तो मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ इस पूरे सीरीज के अंदर, इस रोड मैप के अंदर, वो ले रहा हूँ प्रोजेक्ट्स वाली अप्रोच, कि हम सीधा ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जिस प्रोजेक्ट से, क्योंकि मेरा एक गोल है इस चैनल पे कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कोडिंग के अंदर। देखिए, सिखा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देना कि हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मेरा गोल है यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे प्रोजेक्ट की। बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसके थ्रू, जैसे हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर सीख लिया कि इससे हाइड्रेशन सीख लेंगे, इससे हम डिफिंग एल्गोरिथम सीख लेंगे, इस टू डू से हम वर्चुअल डॉम सीख लेंगे। तो एक एक चीजों को मैप करके हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे अच्छे से इन डेप्थ में जाके, जैसे हम ये फाइबर का कॉन्सेप्ट हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। तो वहां से हम, ये हमारा लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अभी आपको लर्निंग प्रोसेस समझ में आ गया कि हम सीधा ही कूदने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, जब प्रोजेक्ट में कूदेंगे तो कुछ चीजें मैं इग्नोर कर दूंगा कुछ टाइम बिंग के लिए, लेकिन बाद में आगे जाके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर या आगे प्रोजेक्ट के अंदर उसको वापस से लेके आऊंगा मैं आपके पास। तो कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, रिएक्ट के बारे में क्या है कि एक और चीज आती है कि रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। अच्छा, रिएक्ट अगर लाइब्रेरी है तो सर ये फ्रेमवर्क भी हमने सुना है और लाइब्रेरी भी हमने सुना है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, डेप्थ में इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनता है, बट अभी छोटे से के लिए एक चीज समझ लीजिए। फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूँ मिलिट्री और लाइब्रेरी को बोलता हूँ मैं कूल डूड। कूल डूड पता है ना, वो टोपी उल्टी सीधी वगैरह लगाते हुए बड़े स्टाइलिश जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो फ्रेमवर्क मिलिट्री क्यों है? क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर रूल्स का बड़ा ध्यान दिया जाता है। क्या नेमिंग कन्वेंशन होगा फाइल का, इसी नाम से ही फाइल बनेगी, इसी फोल्डर के अंदर ही बनेगी, डेटा इसी तरह से ही फैच होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं। तो उसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। जैसे आपके Django फ्रेमवर्क है, Next.js फ्रेमवर्क है, तो वहां पे ऐसे काम होगा तो ऐसे ही होगा, इसलिए मैं मिलिट्री बोलता हूं उसको। लाइब्रेरी थोड़ी कूल डूड टाइप्स होती है। देखिए, टोपी को सीधा लगाया तो भी कूल डूड है, टोपी को उल्टा लगाया तो भी कूल डूड है, जीन्स नॉर्मल पहन ली तो भी ठीक है, थोड़ी सी स्क्रेप्ड ऑफ पहन ली तो भी कूल डूड है। तो लाइब्रेरी थोड़ी सी कूल डूड टाइप्स है। तो लाइब्रेरी में आपको फ्रीडम ज्यादा मिलती है कि लाइब्रेरी को क्या क्या सीखना होता है। देखिए, रिएक्ट अगर आपको सीखना है कहीं से भी, तो सबसे पहले कोर सीखना होता है रिएक्ट का। तो कोर के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है स्टेट। स्टेट वैसे तो देखिए बहुत बड़ा एक टर्म है, बट अभी के लिए स्टेट को आप ये देख लीजिए, वेरिएबल्स या यूआई के ऊपर हम देख सकते हैं कि स्टेट और यूआई मैनिपुलेशन, ये आपको सीखना होता है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप डायरेक्टली कोई वेरिएबल चेंज कर देंगे तो वो यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है, कैसे करवाना है उसको, वो सारा काम हम कोर के अंदर सीखते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है रिएक्ट के अंदर, जो है JSX। देखिए, JSX दिखने में बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं कुछ भी। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML लिखते हो, बेसिक्स के लिए इतना काफी है समझने के लिए। वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, समझाऊंगा भी, चिंता मत कीजिए, सीरीज में आगे जाके आपको JSX पूरा इन डेप्थ समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं, वो हमारा JSX है। तो इसी तरह की और भी चीजें आप कोर के अंदर सीखते हो। उसके बाद हम सीखते हैं कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी। अब ये कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी ना कोई रिएक्ट का प्रोप्राइटरी स्टफ नहीं है, इससे पहले भी कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी हो रही थी, PHP के अंदर भी हो रही थी, लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा आसान है उन चीजों को करना। तो सकते हैं आता जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज नहीं पता, हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं ना हमारी की और वैल्यू, हाँ जी वही है, वही प्रॉप्स है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रॉप्स बोल दिया है, वही प्रॉपर्टीज है, वही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। इसलिए कहता हूं जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन जितने समझ में आएंगे उतना काम आसान होगा। जस्ट कि रिएक्ट है कुछ कई लोग कहते हैं कि सर इस कोर्स में तो पेड कोर्स में आपने ये वाला हुक नहीं कराया, वो वाला हुक नहीं कराया। ये तो ऐसा हुआ कि HTML का एक एक टैग बताओ। अरे आपको 2-3 टैग 5 टैग अगर समझ में आने लग गए हैं तो यूज भी दिख रहा है और यहीं पे रिएक्ट खत्म हो जाती है। लेकिन अक्सर लोगों को रिएक्ट के साथ और भी काम सीखने होते हैं, जैसे कि उनको मल्टी पेज एप्लीकेशन। वैसे तो आप एक टर्म और सीखोगे यहाँ पे, SPA। रिएक्ट बनाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि पेज कभी रिलोड ही नहीं होता है। हाँ जी, सही बात है। अब पेज कभी रिलोड ही नहीं होता है तो आपको तो URL चाहिए, जैसे hiteshchaudhary.com/profile/about/contact। तो जब पेज ही रिलोड नहीं हो रहा है तो हम नए URL पे कैसे जाएं? हाँ, वहां पे मैनिपुलेशन होता है थोड़ा सा। तो आप चाहते हैं मुझे तो वो भी सीखना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें राउटर सीखना पड़ता है। अब राउटर रिएक्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, इसके लिए आपको एक एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अब नया पैकेज आ गया तो नई चीज सीख रहे हो आप। जैसे रिएक्ट लाइब्रेरी आई थी, वैसे ये भी एक लाइब्रेरी आती है। तो जब नई लाइब्रेरी आ गई तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम रिएक्ट सीख रहे हैं? अभी हम यहाँ पे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो हम रिएक्ट के बाद एड ऑन सीखना चाहते हैं। तो ये कहना, देखिए रिएक्ट यहाँ पे अगर मुझे इतना सा सिखाना हो आपको ये सब, तो रिएक्ट लमसम 5 से 7 वीडियो की कहानी है, मैक्स टू मैक्स। बस 1 वीकेंड 2 वीकेंड पे रिएक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि लोगों का मन नहीं बढ़ता है, लोगों को एडिशनल और एड ऑन सीखने होते हैं, इसलिए हम एडिशनल टॉपिक सीखते हैं। जैसे राउटर नहीं होता रिएक्ट के अंदर, तो हम राउटर सीखते हैं कि किस तरह से राउटर्स का यूज कर सकते हैं हम रिएक्ट के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, हम फिर स्टेट मैनेजमेंट भी सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो कौन सा वेरिएबल कब अपडेट हो रहा है, कौन सा बटन उसको अपडेट कर रहा होता है, कई बार ये पता लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, अभी है, बताऊंगा उसके बारे में भी, पर रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए कुछ लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी अपने आप में स्टैंड अलोन लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है। इनमें से सबसे फेमस लाइब्रेरी है आपकी रिडक्स। अभी जिसका रिडक्स टूल किट इंप्लीमेंटेशन आया, रिडक्स ही है लेकिन उसको थोड़ा सा ईजी बना दिया गया है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन और ला दिया गया है। और इसके अलावा एक्सिस्टेंट, हाँ मैंने एक्सिस्टेंट का भी वीडियो सीरीज बनाई थी इंग्लिश चैनल पे, काफी टाइम से पहले ही बना दी थी, इसलिए लोगों ने कम देखा। और फिर उसके बाद रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करा, एक्सिस्टेंट से पहले कर दिया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये भी क्या देता है आपको? कुछ नहीं, हुक्स ही देता है जिससे आप स्टेट मैनेजमेंट इजीली करते हो। अब बहुत सारे लोगों को लगता है सर मुझे तो डायरेक्ट स्टेट मैनेजमेंट सीखना है। नहीं, गलत। स्टेट मैनेजमेंट जब तक आपको रियलाइजेशन ना हो कि यार मुझे जरूरत है अब स्टेट मैनेजमेंट की, मेरी यूआई बहुत इनकंसिस्टेंट हो रही है, या फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन डेटास को फेच करने के लिए, बहुत दूर से मेरा डेटा आ रहा है, मैं डायरेक्टली एक्सेस चाहता हूं उस डेटा का, जब तक आप उसकी नीड नहीं फील करेंगे तब तक आप चल रहा है सारा इंड का बहुत यूज करते थे। अभी क्या है, कहीं कहीं, हाँ जी, तो बहुत सारे मार्केट मीडिया की ऐप बनानी है वहां पे। ऐड के बाद भी आप डायरेक्टली बैकएंड में जाके स्विच कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो बैकएंड अच्छा लगता है, मैं बैकएंड के अंदर जाऊंगा, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे थोड़ा फ्रंट एंड वगैरह में मजा आ रहा है, तो रिएक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जानिए, रिएक्ट एक कंप्लीट सोल्यूशन ना कभी था और ना उसका कोई इंटीरियर होगी। हालांकि बेसिक एप्लीकेशन में फास्ट दिखता है, लेकिन कई So हाँ जी basically we are just done with the first video. Completed the first video within 14 minutes. So just took half of the time, and like it was just introduction,
and I think that probably we are gonna just sorry, yeah. I'm sorry. Okay, yeah. So just a second. Absolute apologies, my friends, for like my sudden disappearance. So I actually got a phone call and I had to attend it. It was an important one. Okay, let me just see. Okay, so if I. Okay, looks good. Also, I'm you. Yeah, let's restart. जी कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है आपका एक सीरीज के अंदर जिसका नाम है चाय और रिएक्ट। हाँ जी,
अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले रोड मैप देख लीजिएगा। बड़ा ही आसान सा वीडियो है, कुछ खास किया नहीं है उसमें, बस एक माइंडसेट सेट किया है कि किस तरह से हम आगे करने वाले हैं। और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीधा कूद रहे हैं कोड के अंदर और सीधा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट, अभी तो कुछ आता ही नहीं रिएक्ट का। अरे चिंता मत करो, हम आसान ही बनाएंगे हर चीज़ों को। तो इसी तरह से हम शुरू करेंगे, डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट बना के देखेंगे किस तरह से फाइल स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा सीखेंगे और कुछ करके देखेंगे, क्योंकि कोड सीखना है ना अगर, तो डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा। और हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में देखेंगे, एक सेटअप करेंगे एनवायरनमेंट को, थोड़ा सा हेलो वर्ल्ड बनाएंगे, थोड़े से बटन्स बना के देखेंगे, उनसे क्लिक करवा के देखेंगे। तो एक बार हमें इतना तो आइडिया हो जाए कि अच्छा इस तरह से काम होता है और इस तरह से मैं काम करवा सकता हूँ रिएक्ट से। एक बार ये हो जाए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका इन डेप्थ डिटेल देखेंगे कि रिएक्ट किस तरह से काम करता है, क्या चीजें मैंने लिखी, वो जो मैंने जितना भी कोड लिखा है वो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन कैसे चल रहा है, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी बिहाइंड द सीन काफी देखे थे। तो वो सारा डिटेल फिर हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ तैयार हैं आप एकदम। मैं तो एकदम तैयार हूँ। और देखिए वापस से आपको दोहराना चाहूंगा एक बात कि जब सीरीज इतने मन से बना रहे हैं, इतने धमाकेदार बना रहे हैं, तो हर वीडियो पे लिंक्डइन शेयर और हर वीडियो पे एक कमेंट आना तो बनता है। जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊँ वैसे वैसे कमेंट्स करते जाइएगा। 2 3 4 जितने कमेंट्स होंगे उतना अच्छा लगेगा। तो लास्ट वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैंने कहा नहीं सेकंड वीडियो भी आज ही बनेगा। तो फटाफट हमने शुरू कर दिया। तो अभी सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हमारे टूल्स इकट्ठे कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। अच्छा रिएक्ट कंपाइलर इंस्टॉल कर लेते हैं। अलावा एक हमें चाहिए फोल्डर, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक नया फोल्डर। इसका तो ये हमने नाम दे दिया। ऑब्वियसली बात है, रिपोजिटरी तो अपडेट कर ही लेते हैं। आपको आती होगी कई लोगों को, जिनको नहीं आती है कोई बात नहीं, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने एक टर्मिनल ओपन करा है पूरा और यहाँ पे हम कमांड्स चलाएंगे। पहली कमांड यहाँ पे दे रखी है कि आप एक फाइल इसके अंदर बना लीजिए। तो ये एको से एक फाइल यहाँ पे बना रहे हैं। तो चाय और कोड के अंदर एक readme.md रिएक्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे मिल गए हैं कि सारे के सारे कोड वगैरह जो सब है इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हम भी इन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीएस कोड एक फायर करते हैं हम अपना। फायर करने से मेरा मतलब है कि स्टार्ट करते हैं उसको, वीएस कोड को। तो वीएस कोड स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा वीएस कोड, ठीक है जी। अरे बहुत कुछ इंस्टॉल करना है इसको, अभी नहीं करेंगे हम कुछ भी। और ये चाय और रिएक्ट वाला जो फोल्डर है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया है, ठीक है जी। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है मतलब ओपन हो गया है ये फोल्डर यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, जो आपको जितने भी कमांड्स वगैरह यहाँ पे दे रखी है वो कमांड्स आपको यहाँ पे चलानी है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को यहाँ पे साइड बाय साइड लगा लेते हैं। ये लीजिए सारे फोल्डर्स वगैरह लग गए हमारे साइड बाय साइड। अब कुछ नहीं करना, ये कमांड्स यहाँ से देखनी है और एज इट इज यहाँ पे चला देनी है। वैसे तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर अभी, बट ठीक है, फिर भी एक बार रिपोजिटरी तो अपडेट कर ही लेते हैं। आपको आती होगी कई लोगों को, जिनको नहीं आती है कोई बात नहीं, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने एक टर्मिनल ओपन करा है पूरा और यहाँ पे हम कमांड्स चलाएंगे। Hi. Okay, so I guess the entire, so I'll just first of all create a new folder. Right, and creating that new folder is necessary. Yeah. So let me just create that folder. Coding shy or code backend. Okay. I wanna update the Now I have created a repository. Let's follow the video ones. Just okay, cool. Right. पहली कमांड यहाँ पे दे रखी है कि आप एक फाइल इसके अंदर बना लीजिए। तो ये एको से एक फाइल यहाँ पे बना रहे हैं। तो चाय और कोड के अंदर एक readme.md करके फाइल यहाँ से बनवा रहे हैं। तो ये कमांड होती है रीडमी फाइल बनाने के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से फाइल नहीं बनानी, मुझे तो मैनुअली बनानी है यहाँ पे। तो मैं मैनुअली बना लेता हूँ। इसका नाम देते हैं हम यहाँ पे। Okay, so I'll just fire up the terminal as well. New terminal makes sense. And also I just wanted to explore some new themes as well. OLUC right now.
let's check created some file. So okay, so we have this. So we just place it like this. Yeah, this is good. Yeah, this is good because I have to keep in check like what I'm developing. Also, I'll have to check if the display is okay or not. Okay, so I'll have to make some quick changes to the OBS as well. So yeah, I guess that does it. Right, everything looks perfect now. Everything looks perfect. Great. So now I will quickly go and grab not just go and grab, but yes, now it looks perfect. Yeah. Yeah, there should be a way where I actually keep my live streams like running in some different background, but then that's not a problem. readme.md ठीक है जी, इस md फाइल के अंदर कुछ लिख लेते हैं, टेस्ट ही लिख देते हैं. So now I will not jump forward, but follow after him. धीरे धीरे बताएंगे. वीएस को गिटहब के बारे में मैंने इतनी बात नहीं करी है, तो इसलिए ज्यादा अभी हम चर्चा नहीं करेंगे इसके बाद. इंस्टॉल, उसके बाद कहा कि गिट को क्या करिए, ऐड कर दीजिए. जो रीडमी फाइल आपने बनाई है, तो मैंने रीडमी फाइल ऐड कर दी. उसके बाद कमिट भी करनी पड़ती है, तो गिट कमिट एक मैसेज देना पड़ता है -m से, और इसको बोल देते हैं स्टार्ट ऑफ रिएक्ट सीरीज. ये सारे काम मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, ये समझ में आना भी आपको जरूरी है. तो मैंने ये काम करा और कमिट कर दिया. ठीक है जी, ये फाइल हो गई है कमिट. अब इसके बाद हम ब्रांच भी चेंज कर लेते हैं. गिट ब्रांच डैश कैपिटल M और मेन. ये मैंने ब्रांच का नाम चेंज कर दिया, ओवरराइट कर दिया एक तरह से मेन का. उसके बाद मुझे एक ओरिजिन सेट करना होता है और फाइल्स को पुश करना होता है. बस इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी हम गिट में नहीं जाएंगे. वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स है गिट भी अपने आप में, कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे उसके बारे में. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको सारा कोड फाइल मिल जाए यहाँ पे. ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो होपफुली मेरी रीडमी फाइल यहाँ पे आ गई. अब मैं जितना भी कोड लिखूंगा वो सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब इसको हम पूरा फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं क्योंकि अब हम आधे आधे में काम नहीं करेंगे. एक्चुअली में कोड हमें पूरा ही देखना चाहिए यहाँ पे इस तरह से. Okay, so I'll just create a new folder and I'm gonna name that 0000. That's it. I'm just gonna name it 00, and because we are not gonna do something really great or interesting over here, let's just change the directory and cd path. Let's say cd change directory 00. I'll do a quick touch readme.md. Created that, and I'll after creating a I'll just say get init. Okay, git add readme.md. Perfect. Then git commit /m start of
So I'll just give the message first commit. I hope this entire thing is visible to you guys. I'm just gonna squeeze this down a little bit. First commit. Okay, we got this. Now let's do git bra /m main, and inside this git add we'll just add the remote origin. Copy paste this, right? Inside this we'll just push this. Oh, perfect. Gonna refresh this. Now we get this new git commit. Also, I'll use Vercel to create the new React project. So I'll just quickly Google Vercel create React app. Oh, so basically we don't use Vercel. So I mean, I completely forgot. I guess it was Vercel. I completely forgot. तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे और रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन से सीखें। Create React App is great for getting up and started with the React application, but it's definitely not the best way to do it. First of all, Create React App is quite slow. As you can see, just starting up my development server is taking quite a while, and every time you make changes, it's a little bit slow to refresh, especially as your application grows. But on top of that, it just doesn't have all of the best practices that something like Vite has. If I instead wanted to create a Vite, okay. I completely forgot what like Vite was. How can I forget it? Vite. Yep. Right, so this is the one which I was talking about earlier. So we're gonna use this to Vite React. We're gonna do this, and it's basically Vite install. We're gonna use npm for the same. Create Vite entity. Yes. I'm gonna name my project Simple React.
Okay, so now we have this entire folder structure with us, which is ready to go. There is another file, git.ignore. How to create git ignore file. Let's check this out as well. Git ignore generator. React create. So I don't see that there is anything very trivial in this, so we're just gonna leave it right now and not create git ignore right now. Also, there is just one already readme.md file created, so we're gonna probably rely or not. I'll just, yeah. Now create a React app, change the commits, push it in the main branch, refresh it, and we have a simple React project, and inside this we have everything we created using White and React. And how you run the project: npm run start. Okay, so we don't do that. White run. Okay, we'll have to go to there is a LinkedIn post related to it. White React. Okay, so I'll have to change my directory. npmi installing all the dependencies. And I'll do npm run dev. Right, this is working. Just do localhost this and see, this works. Perfect. Right. Also, now we'll do one more important thing, which is I'll just quickly go to displays and I'll turn off the night shift for some time, and I'll go to themes. I'll go to color themes, check if Lucy evening, then one dark pro,
It's not good either. I think that this Rainier is good. Okay, not sure that if it is good or not. Probably depends on what kind of source code it allows. So let me just go to app.jsx src. Also if I right, okay, everything changes when I increase the temperature. So use a color theme. Rainier is like this. Okay. Solarize dark is one. Too much color. I want something which is like dark horizon. This is like okay. Default dark is Kimber dark. Material theme is also good. It looks good. Just wanna check how it looks when it is like, let's say, yeah. Dark Horizon is gives it a very pumpy feel. I don't like that. Material theme, this looks good. Probably we'll just settle for that. Material theme darker would also do. High contrast. On guided. One Dark Pro. Basically it okay. It's I guess Dark Horizon this time. Or once again, no, I don't want to use this. I'm being pretty indecisive. Nah, I don't like this either. It's gonna be rainier this time. It's gonna be rainier. No, man. I mean, not comfortable. Not feeling comfortable in this. Rainier shadow. No. I mean, once again, oh, it's gonna be oh Lucy once again. I mean, I cannot change it. Become comfortable with this theme. I can't and won't and shan't change it. Yep. Also, I'm a little bit sleepy, but today I'm gonna push
Past my limits. Okay. All right. So now let's once again go to the chat. वीडियोस देखना अच्छी बात है अगर आपको अच्छा मेंटर वहाँ पे मिल गया है तो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से जितना समझेंगे तो कुछ भी अपडेट आता है, पढ़ने की अच्छी हैबिट भी बनती है, लेकिन कुछ अपडेट आता है तो मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि एक वीडियो हितेश सर डालेंगे तो हम देखेंगे या तो हम सीखेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन से खुद ही सीख लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब आते हैं यहाँ पे लिख रखा है कि आप लर्न यहाँ से कर सकते हैं, एपीआई रेफरेंस भी, ठीक है। मुझे लर्न रिएक्ट के बारे में बताओ। तो देखिए क्विक स्टार्ट है यहाँ पे, टिक टैक टो भी इन्होंने बना रखा है, थिंकिंग इन रिएक्ट भी बना रखा है। ये सब हम पढ़ेंगे कि थिंकिंग इन रिएक्ट के अंदर कैसे आप रिएक्ट को देख सकते हैं, कैसे सोचना चाहिए रिएक्ट के अंदर, क्या गाइडलाइंस है, यहीं से बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्चुअली में आती है। अभी हम जाते हैं हमारे क्विक स्टार्ट पे। तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट में इन्होंने बोल रखा है ये कर दो वो कर दो, ठीक है भाई, ये सब तो ठीक है। इंस्टॉलेशन भी तो बताओ कैसे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में इन्होंने कह रखा है कि ठीक है आप क्या कर सकते हैं, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अरे पढ़ने तो React.js आए थे, इसने तो सीधा ही नेक्स्ट ऐप बनवा ली। अभी लास्ट रोड मैप के अंदर देखा था कि वो तो फ्रेमवर्क है, वो भी फुल स्टैक का फ्रेमवर्क, तो नेक्स्ट से स्टार्ट करना है क्या। फिर इसने रिमिक्स स्टार्ट करवा दिया, गेट्स भी स्टार्ट करवा दिया। अरे बेसिक रिएक्ट तो सिखा दो, बेसिक रिएक्ट भी सिखाते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि एक्सपो भी बना सकते हो, नेटिव एप्स। अरे कहाँ चली गई बात, एक्चुअली में समझे कैसे इसको। यह डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली में उतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ। उसके बाद आपने लिख रखा है कि विदाउट ए फ्रेमवर्क अगर यूज करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे वीट पार्सल इनको यूज कर लीजिए। ये सब क्या है, एक बंडलर है। बंडलर क्या करता है, आप बहुत सारी फाइल्स में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, उन सबको कंबाइन करके और एक बेसिक आपको एक फाइल देता है जिससे आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है रिएक्ट के बारे में जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिएक्ट क्या है, एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन क्या है जो लाइब्रेरी है ना वो है रिएक्ट और रिएक्ट डैश डॉम, ठीक है। अच्छा रिएक्ट डैश डॉम भी नहीं है, सिर्फ जो कोर लाइब्रेरी है वो तो रिएक्ट ही लाइब्रेरी है हमारे पास, लेकिन रिएक्ट की लाइब्रेरी के साथ और कुछ अटैचमेंट भी आपको मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अटैचमेंट आपको मिलता है रिएक्ट डैश डॉम, और इसी तरह से एक और आपको मिलता है जो कि है रिएक्ट डैश नेटिव। तो रिएक्ट लाइब्रेरी क्या करती है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आप एप्लीकेशन बना सकते हो, किस तरह से आप रेफरेंसेस होल्ड कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन देखिए रिएक्ट से आप और भी आप 3JS वगैरह के अंदर एनिमेशन वगैरह वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेबसाइट पे काम करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा उसको बोल देते हैं कि रिएक्ट का काम है सीधा का सीधा रिएक्ट डॉम से। अगर मुझे रिएक्ट नेटिव के अंदर या मोबाइल ऐप्स बनानी है तो मैं रिएक्ट भी लूंगा और साथ में रिएक्ट नेटिव भी लूंगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अगर मैं मोबाइल ऐप्स बनाऊंगा तो रिएक्ट की नॉलेज जो है वो तो काम आएगी, जो फाउंडेशन है लाइब्रेरी का वो तो काम आएगा, लेकिन मैं रिएक्ट नेटिव के बारे में ज्यादा पढ़ूंगा। अगर मुझे वेब पे ज्यादा काम करना है तो रिएक्ट तो ऑब्वियसली बात है, कोर लाइब्रेरी है तो इसको तो मैं लूंगा ही लूंगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं वहां पे। लेकिन इसके साथ में क्या लूंगा, रिएक्ट डॉम लूंगा। अब इसके साथ कुछ स्क्रिप्ट्स भी आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि वेब पे काम करना है तो रिएक्ट डॉम के साथ काम करेंगे, मोबाइल पे करना था तो रिएक्ट नेटिव, 3JS की भी अलग एक लाइब्रेरी आती है इसी तरह की, तो रिएक्ट तो लेंगे उसके साथ में वो लिया जाता है, ठीक है। अभी इसने कहा कि ठीक है इस तरह से आप प्रोजेक्ट बना दो। हम क्या करते हैं, सीधा ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर मैनिपुलेशन करके देखते हैं, तो सीधा ही वहीं पे आते हैं। अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना कुछ एक दो तरीके हैं, उन दोनों तीनों तरीकों को हम देखते हैं आपस में यहाँ पे कि किस तरह से क्या काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहला और जो सबसे बेसिक तरीका है रिएक्ट बनाने का वो है हमारा npx। npx क्या है, अभी जब आपने नोड इंस्टॉल करा था तो आपके पास एक और पैकेज साथ में आता है, नोड पैकेज मैनेजर, जिसको बोला जाता है npm। अब नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, जैसे पाइथन के अंदर भी आते हैं, हर लैंग्वेज के साथ कुछ इंस्टॉलर्स आते हैं जो आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए अलाउ। I'm gonna have there's just one important message which I have to deliver to someone. It's gonna just take 1 minute.
So yeah, now let's talk about how the how the entire let's say so yeah, how the main.js is working. So let's take into accord like the the bundler which we have used to create the application. So here we have used so here we have used I guess, yeah, white. So if we haven't used white over here, so basically this entire React DOM method, creating a React virtual DOM. So basically what React DOM does is it creates a virtual React DOM, and what it does is it basically creates a virtual DOM, and it compares it with the actual DOM. So and then definitely makes the changes. It uses differ algorithm. So what's differ algorithm, we'll just reiterate over it a little bit later. Yeah, and now basically if we haven't used basically if we would have used npx create react app for the same to install and to ignite our React application, then this would have been done by the scripts module, which makes our entire React application a little bit heavy. Now if let's say for example so this is where using a bundler comes into the picture. What it does is it reduces the file size of the React application which we are basically creating. So rather than injecting it within itself, let's say for example now I try to inspect this page, and as soon as I inspect the page or maybe view page source, yeah, so check that this script is automatically injected over here. I'm just gonna reduce the size, and let's compare it with our index.html. Okay, so this has the script and this has the script as well. If we use create create react app for the same, so what it does is it basically so there's no way where where we inject our JavaScript directly into the HTML, which we have to do every time no matter what. But then it doesn't do directly, it uses React scripts for the same, and this while we are using white for the same, it basically uses dot render method, and it includes it preliminarily. So yeah, that's it. That's what basically the difference between create npx react app and create using white is. It's already 12:06 I think, and we have completed how many videos? So right now we have completed 3 videos. अगर वहाँ पे सिर्फ Let's जावा take a short break, and then maybe we'll restart after some time. Okay, so I'll probably see you in a while. And yeah, so we'll continue from where we have left. We'll start with the 4th video itself. All right,